The Pancha-Pandava Rathas are simply spectacular. They are monoliths, that is, they are made out of a single living rock, like many of the other structures in this area. The Pallavas were pioneers in this kind of architecture. में वुहान में हुई थी। वुहान समिट के बाद भारत चीन के बीच कई क्षेत्रों में साझेदारी को स्थिरता मिली थी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संवाद को मजबूत बनाने पर सहमति हुई थी। और अब वुहान स्पिरिट से चेन्नई स्पिरिट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दी अर्जुना पेनेंस परिसर में आगमन। और अब देखना दिलचस्प होगा कि मामल्लापुरम अनौपचारिक बैठक में वुहान से आगे का सफर कैसे बढ़ता है। At Wuhan, Prime Minister Modi had expressed hope that such informal summits would become a tradition between the two nations. And we can recall when Prime Minister Modi was in Wuhan in 2018, he was welcomed with the tune of a famous Hindi movie song, Ye Vada Raha. Music binds, culture unites. Beautiful culture of the historic city of Mamallapuram beckons a special visitor today, the Chinese president. मामल्लापुरम का चीन के साथ पुराना संबंध है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बरामद हुए पहली और दूसरी सदी के सेलाडॉन यानी मिट्टी के बर्तन यहाँ चीनी समुद्री गतिविधियों को बताते हैं। उस काल के चीनी सिक्के भी तमिलनाडु में मिले हैं। दी अर्जुना पेनेंस की अगर बात करें तो ये देखने में बहुत ही आकर्षक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ट्रेडिशनल चेन्नई ड्रेस में एक संकेत देते हुए भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति का, और ये विरासत देशों को जोड़ती है। इस मंदिर को गणेश रथ कहा जाता है और कृष्णास बटर बॉल को यहाँ के स्थानीय लोग कृष्ण का माखन लड्डू भी कहते हैं। गौरतलब है कि ये पुरातात्विक स्थापत्य न होकर एक प्राकृतिक स्मारक है। Tourists get attracted to the Krishna's butter ball.
They want to get clicked with the butterball as if they were carrying it. They try hard to move it as well. The Arjuna's Penance is a magnificent bas relief that suggestively depicts the story of Kirat Arjuna of the great epic Mahabharata. With this city of Mamallapuram, China has a spiritual connection, historical connection, cultural connection, ecological connection. Amidst these boulders, the greenery giving the message of ecology so necessary for any economy to prosper. India and China are two large economies of Asia. It is said that the 21st century is an Asian century, and therefore the role of both the nations, India and China, becomes very critical. Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping have met on multiple occasions. Besides the first informal summit in Wuhan, they have met on the sidelines of many global summits like the BRICS summit, G20 summit this year in Osaka, Japan, last year in 2018 in Buenos Aires, Argentina. The leaders met at the SCO summit at Bishkek as well. And it is interesting to observe that both the leaders believe in taking ties beyond capital cities of New Delhi and Beijing. That's the Arjuna's Penance. The panoramic view that one can see on this bas relief depicts the life in the forest, beautifully sculptured, dates back to the Pallava dynasty in the 6th and the 7th century AD. और जहां तक कृष्णा बटरबॉल की बात है तो आपको जान के हैरत होगी कि जनता की सुरक्षा के लिए 20वीं शताब्दी की शुरू में इस बटरबॉल को, इस पत्थर को अपनी जगह से हटाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन यह पत्थर अडिग है, स्थिर है और संदेश देता हुआ कि यह एक प्राकृतिक स्मारक है। दूर दूर से लोग मामल्लापुरम आते हैं इस धरोहर से जुड़ने के लिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन हेरिटेज साइट्स पर जाएंगे। खुले माहौल में दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत होगी और उम्मीद है कि उससे दोनों ही देशों के रिश्तों को बल मिलेगा। When the Chinese President Xi Jinping came in September 2014 to India, Prime Minister Modi had welcomed him in Ahmedabad, Gujarat, and we can fondly recall the image of the two leaders sitting on the swing near the Sabarmati riverfront with the Gujarati Garba in the background. The delicacies of Gujarat and the culture of India on display. India is known for its soft power. Both India and China are ancient civilizations. China and India are both important engines for global growth. A good Sino-India relationship is an important and a positive factor for maintaining peace and stability in the world. ये गणेश मंदिर है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी, विघ्नहर्ता
और भारत में तो परंपरा है, जब भी कोई कार्य का शुभ आरंभ करना है तो गणेश वंदना से किया जाता है। ये अखंड मंदिर शिव को समर्पित है। इसे अत्यंत काम पल्लवर वरन के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत काम शीर्षक की पहचान परमेश्वरा वर्मन प्रथम के साथ जानी जाती है। यह मंदिर द्वितल साला विमान से युक्त है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत इस समृद्ध विरासत का रख रखाव किया जाता है। And for any spectator who wants to connect with history, with humanity, can observe and absorb the heritage and learn lessons for a brighter future. Towards the left of the Krishna's butterball is the Ganesh Rath. Even as the sun is also keeping vigil on a very important development, a new milestone in the relations between India and China. On the right side of the Krishna's butterball is the Trimurti Cave Temple. And here comes the Honorable President Xi Jinping. Honorable Prime Minister Narendra Modi welcoming the Chinese President Xi Jinping. A firm handshake. From Wuhan spirit in 2018 to Chennai spirit in 2019. The first meeting point, the Arjuna's Penance. Archaeological evidences show links had existed about 2000 years ago between Mamallapuram, the venue of the second informal summit between the two leaders, and China. The Pallavas, whose flourishing seaport was Mamallapuram, had a relationship with China's and had even sent their envoys there during their rule. Celadon ware, pottery of the 1st and 2nd century Common Era, recovered on the eastern coast of Tamil Nadu, suggest Chinese maritime activities. And the connect that one saw in the history can also be felt in the present as we see warmth, bonhomie, camaraderie between Prime Minister Narendra Modi and the Chinese President Xi Jinping. He arrived in Chennai this afternoon to a very colorful welcome and then has now arrived at Mamallapuram. Smiles being exchanged, and I'm sure a positive message will go not only to Asia but to the whole world. Prime Minister Narendra Modi, while addressing the 74th session of the United Nations General Assembly in New York earlier this year, had started by saying that it's a very special occasion because this year, 2019, the entire world is celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. And his message of truth and non-violence is very relevant
for us even today for peace, development, and progress in the world. Dressed in the traditional Chinese attire, Honorable Prime Minister of India Narendra Modi and the President of China Xi Jinping. So that's the traditional Chennai attire. And now Prime Minister describing the importance of the Arjuna's penance. This is the unfinished rock-cut cave temple. This is towards the north of Krishna Mandapa. This cave temple would have been the largest of all cave temples of the Pallavas. On stylistic grounds, it may be placed later among the Mamallapuram style cave temples in the period of Parmeshwara Varman, who ruled from 672 to 700 CE. This cave temple has a unique plan in having a rock cut shrine at the back of the facade hall with an unfinished passage for circumambulation. The facade itself is relieved with a series of what is known as Hara elements. The pillars are unique in having Vyala over the Palaka and below the Kapota, as is seen in many examples during those times. This is a UNESCO World Heritage Site. So taking off from the Wuhan spirit, the Chennai spirit will continue to chart the future course of India-China partnership. If we talk about the United Nations Sustainable Developmental Goals, then SDG 17 focuses on the global partnerships and a positive partnership between two of the Asian giants, India and China, will certainly help in accomplishing sustainable developmental goals. The panoramic view that we see on the Arjuna's penance depicts the life in the forest, which is aptly sculptured in two large boulders. The cleft between the two boulders is utilized to show the flow of the river Ganga.
gods, goddesses, celestial beings rush towards the central point to witness the great event. But even as we see this panoramic view of the Arjuna's penance, there is another story, as the legend has it. Some scholars identified the panel of the Arjuna's penance with the story of Bhagiratha bringing the Ganges to the earth. This is known as the descent of Ganges. According to them, the representation here is that of Bhagiratha's penance and Shiva granting him the desired boon by agreeing to release Ganga from his locks, the scene representing the descent of the river from the jungle covered hills in the joyful presence of the gods. महान महाकाव्य महाभारत की जो प्रसिद्ध कथा थी किरात अर्जुन, उस पर आधारित है द अर्जुन पेनेंस, यानी अर्जुन की तपस्या। अर्जुन शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि किरात यानी हंटर के रूप में भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। कठोर तप के पश्चात शिव द्वारा अर्जुन को वरदान स्वरूप पशुपत अस्त्र, जो कि एक दिव्य अस्त्र है, प्रदान करने की जो कथा है, उसे यहां बखूबी दर्शाया गया है। और इस विशाल चट्टान शिल्प के बैकड्रॉप पर वर्तमान में इतिहास बनते हुए ये पल्लव मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस घटना के साक्षी तीनों लोकों को जीवंत तरीके से अंकित किया गया है। भगवान विष्णु का लघु मंदिर भी देखा जा सकता है। और कुछ विद्वानों का तो मानना है कि भगीरथ की कहानी जब वो गंगा नदी को धरती पर लाए थे, उसे द अर्जुना पेनेंस में उकेरा गया है। और अर्जुन की People's Republic of China and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to this cultural presentation by Kalakshetra Foundation. I would also like to extend a warm welcome to the members of the delegation accompanying both leaders and other distinguished guests. 我非常荣幸欢迎中华人民共和国 Attempt to provide a glimpse into the various facets of performing arts in India, which have been an intrinsic part of our cultural heritage over several millennia. The principles of the classical tradition of Indian dance and music have been laid down more than 2,000 years ago in the text known as Natya Shastra, written by Bharata Muni. Currently, there are 8 widely recognized classical dance forms and hundreds of folk dance traditions. Today's performances will feature 2 classical Indian dance forms, Bharatanatyam and Kathakali.
今天的文艺演出将带我们了解印度表演艺术的多个方面。这些艺术几千年来一直是印度丰富的文化遗产的重要部分。2000多年前，巴拉达穆尼确立了印度传统舞蹈和音乐的基本原则，写在了一本书，名为《Natya Shastra》。目前，印度有8种主要古典舞蹈形式和数百种民间舞蹈。今天的表演将展现2种印度古典舞蹈形式：波罗多舞和卡塔卡利。Bharatanatyam is a classical dance form from Tamil Nadu. It has 2 major elements: pure dance known as nritta and expressive dance known as abhinaya. The earliest reference to this art form is found in the Tamil works Tolkappiyam and Silappadigaram, which date back to between the 3rd century BCE and the 2nd century CE. The Natya Shastra also outlines the principles of Bharatanatyam. Kathakali, a classical dance form from Kerala, is a blend of dance, music, and acting. It dramatizes stories which have been mostly adapted from the Indian epics. 波罗多舞是塔米尔奈杜邦的一种古典舞蹈形式，它有2种主要元素：纯粹舞蹈和描述性舞蹈。这种艺术形式最早出现在古典塔米尔作品《Tolkappiyam》和《Silappadigaram》。这些作品可以追溯到公元前300年、公元2世纪之间。Natya Shastra 也概述了波罗多舞的艺术形式。卡塔卡利是喀拉拉邦的经典舞蹈形式，是舞蹈、音乐和著作艺术的有机结合，主要改编了印度史诗中的故事。Before describing the 6 performances that will form a part of the cultural presentation today, I would like to very briefly talk about Kalakshetra Foundation. Srimati Rukmani Devi created the Kalakshetra Foundation in the year 1936 with the objective of preserving and reviving India's rich cultural and artistic heritage. Since then, the foundation has been involved in the promotion and propagation of Indian dance, music, and visual arts. The Kalakshetra Foundation is an institute of national importance. 在即将介绍演出的6场文艺表演之前，我想简单的谈一谈 Kalakshetra 基金会的历史。印度著名的艺术家 Rukmini Devi 在1936年创立了 Kalakshetra 基金会，目的是保护和振兴印度丰富的文化和艺术。从那时起，该基金一直努力推广印度舞蹈、音乐和视觉艺术。Kalakshetra 基金会是一个具有国家重要性的机构。As I mentioned earlier, today's cultural presentation will feature 6 performances by the faculty members, students, and alumni guest artists of Kalakshetra Foundation. 今天的演出由6场表演组成，基金会的师生和校友将参加。We will begin with Alaripu, which literally means blossoming. This pure dance form is a symbolic salutation to the gods, the guru, and the spectator. It is a part of the Indian classical dance form Bharatanatyam. 首先，我们将从阿拉利普开始。阿拉利普的字面上的意思是开花。这种纯粹的舞蹈表演是对上帝、老师和观众的象征性敬礼。它是印度古典舞蹈形式波罗多舞的一部分。Purappadu, which is a preliminary dance in Kathakali, will constitute the second performance in today's program. 第二场表演是卡塔卡利的初级舞蹈 Purappadu。The third performance is an excerpt from the production Mahapattabhishekam, which was choreographed by Srimati Rukmani Devi in the year 1970. It depicts the building of the bridge across the ocean to Lanka. 第三场表演是 Rukmini Devi
在1970年编导的 Mahabharabhishekam 中的节选，它描绘了横跨大海到西里兰卡的大桥的建造。A bhajan by Saint Kabir exalting the worship of Lord Rama will be the fourth performance. Saint Kabir was a 15th-16th century saint and social reformer belonging to a region near Varanasi in Uttar Pradesh. He was brought up in a weaver's family and preached religious and social harmony. 第4场表演是上加比尔的赞美歌，颂扬对罗摩神的崇拜。加比尔是印度15到16世纪的商人和社会改革家，来自北方邦瓦拉纳西附近的一个地区。他在一个织布工家庭长大，提倡宗教和社会和谐。Tillana, a pure dance piece highlighting intricate rhythmic patterns and footwork, will be the fifth performance. 第5场表演是提拉纳，一个纯粹的舞蹈作品，展现复杂的节奏和步伐。The presentation will conclude with a Tamil song that promotes global peace and harmony. 最后一场表演是塔米尔语中的一首歌，这首歌将为全球和平和和谐祈祷。Cultural presentation by Kalakshetra Foundation. 谢谢各位。Thank you.
सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत् सुग्रीवसहितो तदहितहिततां तैरहिततां दत्त सुग्रीवसहितो तदहितहिततां तैरहिततां दत्त सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे 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 दत्त सुग्रीवसहितो तदहितहिततां तैरहिततां तदहितहिततां तैरहिततां दत्त सुग्रीवसहितो समुद्रवदनाचैव तगणं सेतु अगारयद हूतणं तदगहूतगिणं समुद्रमजनाचैव हूतगिणं दहूतणं तदगणं सेतु अगारयद हूतणं तदगहूतगिणं समुद्रमजनाचैव तलं सेतु अगारयद सुग्रीवसहितो
వాహిని నడసేతునా వాహిని నడసేతునా भजो रे भैया राम गोविंद हरि 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 संतत संपद मुख के कारण संतत संपद सुख के कारण जासो भूल भरी जासो भूल भरी संतत संपद सुख के कारण संतत संपद सुख के कारण जासो भूल भरी जासो भूल भरी भजो रे भैया राम गोविंद हरि 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 कहत कबीर जो मुख राम राम कहत कबीर जो मुख राम राम जो मुख दूर भरी जो मुख दूर भरी भजो रे भैया राम गोविंद हरि 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 भजो रे भैया राम गोविंद हरि
Gani da
காந்தி மகாத்மா கட்டளை அதுவே கருணை ஒற்றுமை கதிரொளி பரவி சாந்தி நிலவ வேண்டும் ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும் உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும் கொடுமை செய்தியோர் மனமது திறந்த நற்குணமதை புகட்டிடுவோம் மடமயச்சம் மறுப்போம் மக்களின் மாசிலா நல்லொழுக்கம் வளர்ப்போம் திடம் தரும் மகிம்சா யோகினம் தந்தை ஆத்மானந்தம் பெறவே கடமை மறவோ அவர் கடல் தீர்ப்போம் களங்கமில் அறம் வளர்ப்போம் எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும் ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும் உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும் எங்கும் சாந்தி எங்கும் சாந்தி எங்கும் சாந்தி सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखरती हुई शोर मंदिर का परिसर आज इतिहास के पन्नों को टटोल रहा होगा जब इसका वैभव अपने चरम पर था। शोर मंदिर का परिसर जहां आज की शाम चीन के माननीय राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपने यहां साथ साथ पूरे इस परिसर का भ्रमण किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा। अब कलाकारों के साथ ये ग्रुप फोटोग्राफ।
अनौपचारिक बैठकों के ये बड़े ही खूबसूरत और यादगार पल कलाकारों के लिए जीवन भर संजो कर रखने वाली यादें। आज मित्रता और संबंधों का दायरा और बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस महाद्वीप और दुनिया के लिए रिश्तों के नए दौर की संभावनाएं प्रबल कर रहे हैं।